Then thermometry, thermal expansion and calorimetry. What is temperature? Temperature is degree of hotness or coldness. It indicates ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या फिर ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है. ओके. इट इज द इफेक्ट ऑफ कॉज हीट. हीट changes temperature. So heat is the cause and what temperature is the effect. Then in a pot we have gas, and if its temperature increases, then what happens? Then kinetic energy of each molecule also increases. Then if we start increasing temperature, then we can increase temperature beyond any limit. There is no limit to increase the temperature. No limit, without limit increased. But to decrease temperature, we cannot decrease temperature beyond limit. We can decrease it till 0 Kelvin. Below 0 Kelvin we can't go. Then NTP STP, you all know, it is 273.15 Kelvin and 1 atmosphere. Then scales of temperature. What are the scales of temperature? डिग्री सेल्सियस का ऊपर का टेम्परेचर है 100, नीचे है 0. फॉर फ़ारेनहाइट upper fixed point is 212, lower one is 32. For Kelvin 373 and 273. Okay. What is the triple point? Triple point is 0.01 degree Celsius and 4.58 millimeter of Hg. Then how to convert temperature from one scale to other scale? Very simple formula. Reading minus lower fixed point, upper fixed point minus lower fixed point. Very simple formula. Okay. So we'll do one example about this. We'll convert 50 Fahrenheit, 50 degree Fahrenheit into Kelvin and into degree Celsius. So how to do that? So reading 50. What is the formula? Reading first 50. Okay. Then reading minus what? Reading minus lower fixed point. Lower fixed point for Fahrenheit is 32. Upper one is 212 minus lower is 32 is equal to reading in degree Celsius minus lower is 0. Upper point is 100 minus lower is 0. If we solve this, we will get reading in degree Celsius. If we want reading in Kelvin, तो Kelvin का लिखो, Kelvin आ जाएगा, no problem. तो Kelvin का कैसे लिखेंगे? Temperature in Kelvin minus lower fixed point is 273 upon upper fixed point 373 minus lower fixed point is 273. So if we solve this, then we'll get temperature in Kelvin. Okay. Sometimes temperatures are not given. We are given pressures. So there is a equipment like this, and in this equipment we have kept one gas, and as temperature increases, pressure of the gas inside increases, and by measuring the pressure we are measuring the temperature. Okay, this is a constant volume thermometer. What is it? इसका क्या है? Volume constant है. This is called constant volume thermometer. By measuring pressure we are measuring temperature. Okay. Then for 0 degree Celsius pressure is some 40 millimeter of Hg. 40 millimeter of Hg. Okay. Okay. This is lower fixed point. Upper fixed point is 180 millimeter of Hg. Means what? At 1 millimeter
180 millimeter Hg at this much pressure, boiling of water starts. That means at 100 degree Celsius upper fixed point is this much. 100 डिग्री सेल्सियस को प्रेशर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, ओके. राइट नाउ प्रेशर इज 60 मिलीमीटर. Then find out temperature at this point in degrees Celsius. So how to calculate? Same formula, no change, same simple formula. How to calculate? Reading minus lower fixed point, which is 40, upon upper minus lower. Reading, which is 60, minus lower fixed point upon upper fixed point minus lower fixed point is equal to temperature in degree Celsius minus lower fixed point upon upper minus lower. By solving this we can find out temperature in degree Celsius. ओके, ठीक है. तो उसके बाद व्हाट इज दिस? उसके बाद आता है थर्मोमेट्री. थर्मोमेट्री क्या है? जिस ब्रांच में टेम्परेचर मेजरमेंट का थिंकिंग करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे अपन, दैट ब्रांच इज कॉल्ड थर्मोमेट्री, ब्रांच विच डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. अब टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे वो प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज. कैपिलरी में लिक्विड का लेंथ मेजर कर सकते हैं, लाइक वी डू इन मर्क्यूरी थर्मोमीटर एंड अल्कोहल थर्मोमीटर. प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम देख सकते हैं, अभी बताया मैंने उस एग्जांपल में, वैसा हो सकता है. प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर भी देख सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर. सो दीज प्रॉपर्टीज कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है. फिर क्या आता है? लिक्विड ग्लास थर्मामीटर. लिक्विड ग्लास थर्मामीटर्स मतलब क्या है? वो मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर and alcohol thermometer. Liquid is put inside glass tube. As temperature increases, liquid level increases. Then gas thermometers are of two types, constant pressure and constant volume. I showed you constant pressure, constant volume वैसे रहता है. I showed you constant volume, constant pressure वैसे रहता है. And in gas thermometers, any gas can be used. But in liquid thermometers, any liquid cannot be used. Because all gases behave similarly in same manner. All liquids do not behave in same manner. Therefore, अगर mercury thermometer है तो उसमें से mercury निकाल के if I put alcohol, then it will not work. But gas thermometer में hydrogen है, then I can remove hydrogen, I can put nitrogen, and I can use same thermometer with nitrogen, no problem. Then उसके बाद thermometers which use resistance are called resistance thermometers. चलो, then thermal expansion. Delta L by L is alpha 1 delta T. Alpha 1 is coefficient of linear expansion. This is coefficient of एरियल एक्सपांशन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन. एक बीटा कितना होता है? 2 ऑफ अल्फा. गामा कितना होता है? 3 ऑफ अल्फा. वाटर एग्जिबिट्स एनामलस बिहेवियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? बोलो क्या मीनिंग है? एज वी डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर, पानी का टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी कम होते जाएगा टिल 4 डिग्री सेल्सियस. डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम होते नहीं जाएगा. डेंसिटी विल इंक्रीज टिल 4 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी स्टार्ट्स टू डिक्रीज. इफ वी आर एट 30 डिग्री सेल्सियस, अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस पे तो 30 से 4 डिग्री सेल्सियस जाते वक्त डेंसिटी इंक्रीजेस एंड 4 से 0 डिग्री तक, 4 से अगर हम ट्रैवल करेंगे 0 डिग्री तक तो अगेन डेंसिटी क्या होगा? अभी इंक्रीज नहीं होना चाहिए, अभी होता है डिक्रीजेस, विच मीन्स आइस इज लाइटर दैन वाटर विच इज एट 4 डिग्री सेल्सियस. देयरफॉर क्या बनता है? अगर लेक है, इफ इन कोल्ड कंट्रीज इफ देयर आर लेक्स, देन ऊपर हो जाएगा आइस,
बट नीचे वाटर का वाटर ही रहेगा बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर। 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर है सबसे हेवी, बर्फ भी है हल्का, और हायर टेम्परेचर का पानी भी है हल्का, लाइटर। सो अगर कोल्ड कंट्रीज में लेक्स है तो लेक्स के ऊपर बर्फ बन जाएगा, लेकिन नीचे पानी का पानी रहेगा। एंड इन दिस वाटर aquatic life can survive. Then gamma, coefficient of volume expansion, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस है, सब्सटेंसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये बड़ा होता है, किसके लिए? फॉर कॉपर के लिए। और एट हाई टेम्परेचर इट बिकम्स कांस्टेंट, कॉपर के लिए वो कांस्टेंट बन जाता है। Gamma is independent of temperature for liquids. For gases, gamma is proportional to 1 upon T inverse proportionality. Gamma is equal to 1 upon T for ideal gases. Gamma is equal to 1 upon T. Below, what is the effect of temperature on the period of the pendulum? Temperature increases, what happens? Length of the pendulum increases. Therefore, its time period also increases and watch becomes slow. And in winters watch becomes fast. Watch fast बनेगा means it gains time, slow बनता है mean it lose time. Lose time means पीछे गिरना, and if it gains time means watch आगे जाता है, उसका मतलब है it gains time. So delta T upon T, time lost or time gained upon time period is equal to half into alpha into delta theta, half into coefficient of thermal expansion into delta theta. T is what? If we are calculating for a day, then T is 24 hours. So 24 hours में कितना time lose करता है, that we can get. If we want to calculate for 1 year, then put T as 1 year, number of seconds in 1 year. Then delta T क्या मिलेगा? डेल्टा टी विल बी टाइम लॉस्ट इन एंटायर 1 ईयर। ओके, ठीक है। देन अगर हमने एक स्केल डिज़ाइन किया है, देयर इज अ मेटालिक स्केल विच इज डिजाइंड एट थीटा टेम्परेचर। मतलब क्या है? एट थीटा टेम्परेचर इट गिव्स एक्यूरेट रीडिंग्स, ओके, बट वी आर यूजिंग इट एट टेम्परेचर थीटा डैश, दूसरे टेम्परेचर पे उसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब क्या होगा? इट विल शो रॉन्ग रीडिंग। So what is the true reading? True value is equal to scale reading. Scale पे जितना reading आया वो यहाँ पे रख देने का. Then 1 plus alpha into theta dash minus theta. Theta is thermal expansion of metal of the scale. Okay. There is a cube and a cavity is present in the cube. And if I heat this cube, then volume of cavity का वॉल्यूम क्या होगा? विल इट डिक्रीज और विल इट इंक्रीज? छोटा हो जाएगा वो या फिर बड़ा हो जाएगा? कैविटी का क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कैविटी इंक्रीजेस एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन इज सेम एज दिस सॉलिड का गैमा और इस कैविटी का गैमा, वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट सेम है, सेम। कैविटी भी एक्सपांड होगा। ओके, इन अ पॉट वी हैव प्लेस्ड वन लिक्विड और इसको हीट करेंगे, तो क्या होगा? लिक्विड लेवल विल कम डाउन और लिक्विड लेवल में गो अप। तो अप जाएगा या फिर डाउन आएगा, वो कैसे पता करेंगे? फ्रॉम दिस फॉर्मूला डेल्टा वी अपैरेंट। अगर डेल्टा वी अपैरेंट पॉजिटिव है तो लिक्विड लेवल अप जाएगा, इफ डेल्टा वी अपैरेंट नेगेटिव है तो लिक्विड लेवल डाउन आएगा। सो हाउ टू कैलकुलेट अपैरेंट चेंज इन वॉल्यूम? विद दिस फॉर्मूला, गैमा इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ expansion of liquid. 3 into alpha is what? Volume. Alpha is linear coefficient of this metal of pot. Delta theta is temperature difference. ठीक है। अगर लिक्विड है और उसका टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया, थ्रू डेल्टा थीटा, तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ओके, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा? For that we have this formula. New density is equal to old density into what? 1 minus gamma into delta theta.
Then calorimetry part, specific heat capacity. Q is equal to mc delta T. Heat given is equal to mc delta T. 1 calorie means what? 1 calorie means heat provided to increase temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितना हीट लगेगा? दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी. 1 BTU means this much. रीड करो ये. Then specific heat is Q upon m into delta V or Q upon mu into delta theta. This is molar specific heat. Okay. Then calorimetry. What is the use of calorimeter? Calorimeter is used to find out specific heats of unknown liquids and unknown solids. Calorimeter is isolated from surrounding, therefore it cannot exchange heat with the surrounding. In calorimeter, if we are mixing two liquids or one solid and one liquid, then energy lost by one is energy gained by the other. Then if we have mixed two objects, one might be solid, one might be liquid, or both might be liquids, we have mixed them and temperature of first liquid decreases to theta mixture and temperature of second liquid increases from theta to theta mixture. So heat lost by first one is equal to heat gained by second one. mc delta theta is equal to mc delta theta. Sometimes heat lost is taken as latent heat, and some heat is used to increase temperature. So mc delta theta is equal to mi is equal to mc delta theta. This can also be the case. Then change of state कैसे होता है? That we will see. We have ice, हमारे पास बर्फ है, आइस है, और ice is at temperature minus 20 degree Celsius. So we have started increasing its temperature. उसको क्या रखा है? एक प्लेट में रखा है, and that plate we have put on the flame. So as time passes, it starts receiving energy from the flame, and as it receives energy, उसका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, and it comes to 0 degree Celsius. So 0 पे आ गया अभी, ठीक है. At 0 degree Celsius, we have ice right now. At 0 degree Celsius, as it receives heat, its conversion from ice to water starts. But temperature does not change. Temperature नहीं बदलता. Ice का temperature will remain same, but it starts getting converted into water. 0 degree Celsius पे पूरा ice water में convert हो जाएगा, and it will receive 80 calories per gram energy. 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने में how many calories are required? 80 calories are required. Even after taking 80 calories, आइस का टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, only it changes its state. So ice is converted into liquid at 0 degree Celsius. After conversion into liquid, then temperature of water starts increasing. Temperature increase होगा. Then again at 100 degree Celsius, temperature remains constant until entire water is converted into vapors. पूरा वेपर में कन्वर्ट होने के बाद फिर again temperature of vapor start increasing. Okay. Then fusion means point temperature at which fusion happens is called melting point. Temperature at which
solid and liquid are in equilibrium is called melting point. Okay. Then melting point depends upon pressure. अगर pressure increase कर दिया तो melting point decreases. आइस का प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो instead of melting at 0 degree Celsius, it will start melting at -2 degree Celsius, -3 degree Celsius. Pressure दिया, then melting point decreases and therefore ice melts. And if we remove pressure, then again water refreezes. That is called regulation. Okay, then boiling point, vaporization. In vaporization, liquid and vapors are in equilibrium. That point, that temperature is called boiling point. Boiling point increase हो जाएगा अगर pressure increase किया तो. Heels पे pressure कम है तो boiling happens at less temperature. If normally boiling happens at 100 degrees Celsius, then heels पे boiling will happen at 92 degrees Celsius, 94 degrees Celsius. So to cook properly, food should be cooked in the pressure cookers. Sublimation is conversion of solid into vapors directly without conversion into liquid. And latent heat, L is Q by M, or Q latent heat given is equal to Q is equal to L into M.